बस यार ये एक बार कोडिंग समझ में आ जाए ना तो लाइफ ना सेट हो जाएगी। अरे यार ये कोडिंग वोडिंग ना मेरे बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रही। वो क्या करते रहते हैं एरे के अंदर, पॉइंटर के अंदर एक्सेप्शन। यार मैं ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ और नहीं कर सकता कोडिंग के अलावा। Hello girls and boys, how's it going? How many of you relate to these two people? क्या ये आपकी कहानी है? Are you getting tired with coding only and think यार सॉफ्टवेयर में कुछ तो और होगा कोडिंग के अलावा which I can do, which I can excel at because मुझे करियर तो यही बनाना है, लेकिन यार ये कोडिंग मेरे बस की नहीं है। Today we'll talk about exactly this topic. We'll look at coding from a very different perspective. We will also look at how AI is changing the entire coding landscape itself and कैसे coding बहुत ही different होने वाली है right now starting 2025 and beyond as AI agents, agentic software, all of that takes over the world. I will also give you my famous tool Mind Map on what other areas other than coding exist in the software development lifecycle area, which goes beyond the standard, test engineer, प्रोडक्शन इंजीनियर, सपोर्ट इंजीनियर, ये सब को छोड़ के और क्या रोल्स एग्जिस्ट करते हैं और क्या नए रोल्स आ रहे हैं मार्केट में। आई गिव यू एन एंटायर माइंड मैप ऑन दैट। देन आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट योर ओन रोड मैप फॉर योरसेल्फ, बिकॉज ये ना बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सर मुझे रोड मैप बता दो। ले भैया मैं रोड मैप बनाना सिखा देता हूं तुमको, प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देते हैं आज। एंड देन टुवर्ड्स द एंड we'll talk about 3 things that you need beyond hard technical skills to be able to succeed in your career in 2025 and beyond. And these are very different things. These are not what you expect, and you will have a lot of fun listening to it. And finally, I will close with one skill. अगर पूरे वीडियो में से कुछ टेक अवे करना है ना तो this should be your takeaway. So in short, पूरा वीडियो ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ। It's power packed with information. Now if you new here, my name is Savinder Puri and I've been here in this build, release, DevOps, software engineering area for over 20 years. And along this time, I have had the opportunity to work in US, UK, Europe, South Africa, obviously India. You can go on my LinkedIn and check out my credentials. So strap on your seatbelts. Let's get started. So point number 1, coding is not equal to success. Now don't get me wrong, coding is very essential for software development. In fact, that is the whole basis of creating the software, right? You code to create the software. Coding is very important if you are a DevOps engineer, because without coding, scripting, without creating YAMLs, without creating Terraform, without writing Ansible, you cannot be a good DevOps engineer. So coding is very, very important to have a successful career in the software industry. But the question is, what if you do not like to code? आपको ये समझ ही नहीं आती, आपका मन नहीं करता कोडिंग करने का, फिर क्या करें, right? And is coding the only thing that is required in software development? Absolutely not. There are a bunch of other skills which are super critical for a good software engineer. Basic skills like प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिबगिंग, कहीं फंस गए तो उसको डिबग कैसे करना है, एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक करके उसको कैसे सॉल्व करना शुरू करना है। देन आर्किटेक्टिंग, हाउ आर इंडिविजुअल पीसेस पुट टुगेदर टू क्रिएट अ बिग प्रोडक्ट, टू क्रिएट अ बिग प्रोजेक्ट, हाउ डू इंडिविजुअल पीसेस कम टुगेदर। देन ऑन द सॉफ्टवेयर साइड, कम्युनिकेशन, you might be a great coder, but if you're not able to explain it, what your functionality is doing, how you have built it, you will not go too far in your career unless you are one of those geeks who can sit in a corner and create magic. That's a different category. Then business acumen, जो आप build कर रहे हो उसको business actually use कैसे करेगा, business के thought लेके फिर से coding करना, that is a different skill set. Then logical thinking, that is very, very important. When presented with a problem statement,
how do you approach it in logical steps from 3-4 different directions. And then finally, one of the biggest skills is the ability to explain complex problem or a complex thing in plain English, in simple words, like you would explain to a 5-year-old. One of my bosses used to say, learn coding, but do not become a code monkey. What does that mean? That means don't get obsessed with coding because it's important, definitely, but it is not the only thing in the software industry. Let's talk a little bit more about this. Number 2, AI is changing the coding game. Now, if you have kept your eyes and ears open, you probably would have seen Mark Zuckerberg's latest interview with Joe Rogan on the Joe Rogan Experience, where Mark says that by 2025, AI will be able to code almost as good as a mid-level engineer in Meta. It's a big statement. Hear it out. Probably in 2025, we at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company that can write code. Now, what does this mean? Does that mean mid-level and entry-level engineers are out of their jobs? No, definitely not. What it means is, जिस काम को आपको करने में 4 घंटे लगते थे, अब वो काम आधे घंटे में हो जाएगा. Which means the productivity will go up. And as an engineer, you are supposed to work on problem solving, not coding. Coding will be one of the things that you can give away to an agent, exactly specifying what you need, and the code will be written by you. Today, as we stand, that code has to be reviewed by you, that code has to be tested by you, and from a larger standpoint, you have to make sure that that code fits in properly in your enterprise. This AI cannot do today. Tomorrow, day after, it could definitely change. So what AI is doing is helping you be more productive and focus on things like designing, problem solving, implementing logic, and then the exact mechanics these agents can do. Now, have you seen things like new AI editors like Cursor, for example? Cursor.ai. अगर आपने नहीं देखा है, I would highly recommend you to go to Cursor.ai, create a free account. Till I think 200 odd suggestions, it is free. So you can try it out. And so one of the things I love about Cursor, which they advertise also, is called Tab, Tab, Tab. What does it mean? It's autocomplete. So you just start typing the function, writing the function and press tab, वो autocomplete करता है. Not just the word, but the entire syntax. Also, in Cursor, you can edit in natural language. You can say, hey, this is what I want to do, and it will write the code for it. So all you need to know is how to give good prompts, and Cursor can write the code for you. Now, Cursor is not the only one. There's something called Tab9, where you can prompt code. Right? Again, create a tab, prompt what function you want to be written, and it will give you the first cut of the code. Tab9 भी जाके देखो. Like that, there is also called Windsurf. Windsurf भी एक ऐसे editor है, very helpful. And then the OG of all of them, GitHub Copilot. And now GitHub Copilot, as you probably know, has been made free. You can also have extensions in your IDEs, whether you're using Eclipse, Visual Studio Code, all of that. Get GitHub Copilot extensions, plugins, and you can do a whole lot of magic with GitHub Copilot. Let me know if you want me to make a dedicated video around all of this. But these are some of the tools which are making coding extremely easy and a different level of coding, where you are more now becoming the reviewer than the creator of software. Okay, so the next point now, if not coding, then what? Coding is being made simple. Maybe you don't feel like coding. Maybe that's not where your heart is. So, ab kya kare? Let's go to my favorite mind map, and I'll show you what are the different careers beyond coding that exist today. Right? So the way I've done it is I have mapped it to different fields, different areas. For example, we talk about data, ESG, environment, social and governance, CSR, corporate social responsibility, content, advocates, user experience, community, and then we finally talk about how to build your own roadmap.
right? So different kind of areas depending on your interest, you can pick up one. So let's look at data. There's obviously the data analyst, the data scientist. You probably already know what they do, but this is more on the science of interpreting data. Then we have data QE specialist, the quality engineering specialist, who will go in and figure out कि जो data के साथ आप deal कर रहे हो, is it of the right quality or not. Then the data ops specialist. इसका क्या role है? This role is to figure out कि आपने जो डेटा के साथ ऑपरेशंस किए हैं उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करना है, उसको मास स्केल पे रोल आउट कैसे करना है, उसको सपोर्ट कैसे करना है. एंड देन यू हैव द AIML प्रोडक्ट मैनेजर हु इज टेलिंग यू के मार्केट में ये डिमांड है, हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा से हम ये डिमांड को कैसे फुलफिल करेंगे एंड क्रिएटिंग द प्रोडक्ट रोड मैप फॉर यू. सो दिस इज ऑन द डेटा साइड. नाउ लेट्स लुक एट एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस. What is ESG? ESG has been around for so many years, but now with the advent of AI, there is a lot of talk about climate change because AI के लिए data center चाहिए, data center को cool करने के लिए पानी चाहिए, पानी से environment effect होती है. So ESG will become very, very important in the future as AI gets more enhanced, right? So you have the role of an ESG strategist who creates an ESG strategy for a company. And if you are work in a big corporation, these are very, very important rules because there are government guidelines for adhering to ESG rules as well. Especially if you're working in Europe or US, it's a very strict rules. So there's ESG strategist, there's sustainability consultant who make sure that आपका जो office है, आपका जो enterprise है, वो sustainable practices use कर रहा है, वहाँ पे minimal waste है, those kind of things. Then there is ESG risk manager, who make sure that your organization complies to the government rules and regulations from a risk standpoint. Then there is a role called carbon credit manager. Now, if you know about carbon footprints, everything that we do in technology has a carbon footprint. A lot of the organizations are moving towards being carbon neutral, which means as less carbon as possible, even going to zero carbon. This carbon credit manager's role is to figure out, एक ऑर्गेनाइजेशन का कार्बन क्रेडिट मैनेजर का रोल है टू फिगर आउट एक ऑर्गेनाइजेशन में कार्बन फुटप्रिंट क्या है और उसको रिड्यूस कैसे करना है. सो दिस आर रोल्स इफ यू आर पैशनेट अबाउट एनवायरनमेंट, governance, those kind of things. Then we talk about CSR, corporate social responsibility. Now, if you're the kind of person who likes to think about, social responsibility, this area is for you to create a CSR strategy, right? How will you engage with what is your passion area? Is it education? Is it human rights? Is it child development? Every organization has some focus areas. उसमें strategy कैसे बनाना है, CSR marketeer उस strategy की marketing कैसे करनी है, and then CSR alliance partner, because CSR activities typically अकेले नहीं होती हैं, किसी organization के साथ tie up करके की जाती हैं, वो सारे alliances को manage करने के लिए CSR alliance partners होते हैं. Then on the content side, you have the technical content writer, where you have to write blog posts, articles, website content, which is technical in nature, but outside facing, not company internal facing. Then content localization specialist, which means आपकी website, आपका content अलग अलग languages में translate होगा, which is called localization. अलग अलग country offices के vendors से बात करनी, उनके साथ tie up करना, उनका content लेना, all of that is localization. AR/VR content writer. As applications change, it is no more type, it is audio, visual, AR/VR content. उसके लिए content बनाना एक अलग ही ball game है. Then podcast script writer. This is a new one because a lot of organizations are realizing the power of podcast and they are hiring specialist podcast script writers, especially in the technology domain. They, talks like Lex Friedman. He has a bunch of script writers for him, right? So this is that. Then we talk about advocates. DevRel is developer relation, which is how the developers. So for example, if you have an organization that produces API which are consumed by other companies, then DevRel role becomes very important to bridge that gap. Developer advocate is to advocate developer rights within your organization. Developer को productive होने के लिए क्या चाहिए, क्या tools, क्या technologies, क्या culture, that is developer advocate. Inclusive design advocate. ये नए roles आ रहे हैं, which means inclusive design is
for people who are some kind of challenged, visually challenged, physically challenged. आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि उन लोगों की भी हेल्प कर पाए. Then CSR एडवोकेट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजिस्ट के साथ एडवोकेट आता है. Then community advocate is more on the open source community. Then you have a content advocate who says कि boss, now we've reached a stage, अब हमें podcast launch करना चाहिए. तो content का basically strategy and उसका advocacy internally करने के लिए ये roles. Then on the user experience layer, there is a UX strategist, which is defines यूजर एक्सपीरियंस का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस टाइप का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मल्टी मॉडल चाहिए. यूजर जब एक ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो क्या ट्रांजैक्शन फोन से शुरू होती है, लैपटॉप पे जाती है, फिर टैब पे खत्म होती है, ऐसा भी एक्सपीरियंस हो सकता है क्या. सो वो सब स्ट्रेटजीज डिजाइन करना. वॉइस एंड कन्वर्सेशनल डिजाइनर, because today things like a chat GPT, you can do voice interface as well, you can have conversation as well. तो अगर वैसा इंटरफेस है जिसको आप टाइप नहीं कर रहे हो तो वो डिजाइन कैसे बनेगा. एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट, people who have visual issues, who have sensory issues, उनके लिए डिजाइन कैसे बनाया जाए. AR VR MR एक्सपीरियंस डिजाइनर, गेमिफिकेशन डिजाइनर. Lot of the apps में games are inbuilt, not full blown video games, but I'm talking a little bit of gamification. Banking application में gamification है, education industry में gamification है, even enterprises में gamification हो रही है, hackathons वगैरह, वो सब डिजाइन करना. Then on the community side, there is community builder, community engagement manager. You must have heard AWS में कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, सो AWS कम्युनिटी मैनेजर्स बहुत सारे होते हैं. दिस इज अ रन डाउन ऑन ऑल द रोल्स बियॉन्ड कोडिंग. नॉट ऑल, जस्ट वन स्नैपशॉट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट आउट देयर. अब क्वेश्चन ये है कि भैया ये सब तो ठीक है, मैं अपना करियर इस सब में से किस में लेके जाऊं, कैसे बिल्ड करूं, मुझे समझाओ कैसे करना है. Here's the answer. So list what you do in your current role. अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपके करंट रोल में आप क्या क्या करते हो उसकी लिस्ट बनाओ. अगर आप कॉलेज में हो तो ये बताओ कि आपको क्या करना चाहते हो, क्या करना अच्छा लगता है. लिस्ट व्हाट यू शुड डू इन योर करंट रोल. सो विच मीन्स आपके रोल में आज आप ये कर रहे हो, लेकिन ये भी आपको करना चाहिए जो आप कर नहीं रहे हो, आपका रोल ये मांगता है, वो बनाओ. लिस्ट योर इंटरेस्ट एरिया. आप कर रहे हो पाइथन प्रोग्रामिंग, बट आपको इंटरेस्ट है इन्वायरमेंट में, वो लिखो. आपको इंटरेस्ट है यूजर एक्सपीरियंस, यूजर डिजाइन में, लेकिन आप हो डेवऑप्स के बंदे, वो लिखो. देन सी इन दोनों को मैरी कैसे करना है. आप जो रोल कर रहे हो, जो करना चाहते हो, और जिस चीज में इंटरेस्ट है, उसको मैरी कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेस्ट ऑटोमेशन के बंदे हो और आपको डेटा में इंटरेस्ट है तो टेस्ट क्यूई इंजीनियर बन सकते हो. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बंदे हो और आपको AIML में इंटरेस्ट है तो हाउ डू यू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ML एप्लीकेशंस, वो देख सकते हो. अगर आप एक आर्किटेक्ट हो और आपको एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट है, यू कैन बिकम एन ऑपरेशंस आर्किटेक्ट फॉर ESG. अगर आप कंटेंट राइटर हो और आपको कम्युनिटी में इंटरेस्ट है, you can be a content writer, content strategist for community. So you get the drift, right? It's like the Ikigai principle, right? What you like to do, what you're good at doing, and what the world will pay for. That is how you create your roadmap. Then once this is figured out कि रोल कौन सा आपको फिट बैठेगा, फिर उस रोल का जॉब मार्केट देखो कि उस रोल में जॉब्स कितने हैं. अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में कितने जॉब्स हैं, वर्ल्ड वाइड कितने जॉब्स हैं. एक बार जॉब्स पता चल गए कि हाँ इसमें जॉब्स हैं और निकल रहे हैं, तो अब ये फिगर आउट करो आपके जो स्किल्स हैं और इस जॉब के लिए जो स्किल्स हैं उसमें डेल्टा क्या है, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा. तो आपने फिगर आउट किया आपको क्या करना है, आपने फिगर आउट किया आपको किस में इंटरेस्ट है, इनको मैरी करके रोल बनाया, एक उस रोल का मार्केट फिटमेंट देखा, उस रोल और करंट रोल में गैप देखे, एंड देयर गर्ल्स एंड बॉयज यू हैव योर रोड मैप. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. सो बियॉन्ड द हार्ड टेक्निकल स्किल्स और क्या चाहिए सक्सीड करने के लिए, विल टॉक अबाउट 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट इज कम्युनिकेशन. आपने देखा है कुछ लोग जो जब बात करते हैं तो बंदा ये बोलता है अरे कवि कहना क्या चाहता है ऐसी जलेबी क्यों बना रहा है, सीधा बोल क्या बोल रहा है. दैट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. I've created a dedicated video on how to improve your communication and English. वो जाके चेक कर लेना, I'll pin it in the comments. The second one is selling. What do I mean? See, आप किसी भी एंटरप्राइज में काम करते हो, आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा, आपको अपना काम बेचना पड़ेगा. ये एक स्किल है. कितने ऐसे लोगों को जानते हो जो
पिछले 2 साल 4 साल 5 साल से सेम ही कंपनी में बैठे हैं, सेम ही रोल पे बैठे हैं, ना उनकी प्रमोशन हो रही है ना उनकी सैलरी बढ़ रही है। Why? Because they are not able to sell themselves. The third thing, dealing with office politics. मानो या ना मानो, कम या ज्यादा, ऑफिस पॉलिटिक्स हर ऑफिस में होती है। You and me have to learn how to deal with it. Dealing with office politics is different than playing office politics. खेलना नहीं है, लेकिन खेलना आना चाहिए। Let me know if you want me to make a dedicated video on any one of these topics and I'll add it to the list. Finally, what is the one skill that I need to learn in 2025? अगर इस पूरे वीडियो में से एक चीज लेके जानी है, that is this, the ability to unlearn and relearn. Because अब टाइम वो आ गया है कि आप जो पिछले कॉलेज में आपने पढ़ा है, जो पिछले 2 4 5 साल से कर रहे हो, वो वैलिड नहीं रहने वाला ज्यादा देर। तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, अपने आप को रीइन्वेंट तो करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज में हो तो भी, अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी, अगर आपका 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है तो और ज्यादा करना पड़ेगा। सो द एबिलिटी टू अनलर्न एंड रीलर्न, very very critical. Hope this video made sense, and I have dedicated videos on how to get into DevOps, how to do communication, how to create a network. All of this I will leave here, and I'll see you in the next one. Cheers.